अस्सलाम वालेकुम and hello my YouTube family. आज हम क्या बना रहे हैं? Today we are making a special type of pilau named the 4 pilau by myself. Have a look, see if you find it exciting. तो आज जी हम एक स्पेशल बना रहे हैं पुलाव जो कि बहुत हेल्दी है और यही इसकी ख़ास बात है. तो ज़रा ingredients चेक करें. So what we are taking here is 4 red onions, 4 tomatoes, 4 green chilies, 4 vegetables, 4 cloves of garlic, and a piece of ginger. So 1, 2, 3, and 4. So fry onions in 4 tablespoons of oil. अच्छा जी, अब जी चक्कर ये है कि क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम है तो ये बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं इसको डार्क कलर नहीं कर सकूँगी ग़ालिबन. तो I've just added ginger and garlic. Time for the cumin seeds to go in. I've just put 4 teaspoons of cumin seeds in. I'll just saute it for a bit and then I'll add some water so that it doesn't stick to the bottom surface of the pan. हाय ये आवाज़ें आप सुने. और अब 4 टमाटर मैंने डाल दिए हैं. 4 tomatoes go in. You can hardly see any oil and that is the best part of it. Time for my 4 tablespoons of salt to go in. 1, 2, 3, and 4. So roughly for 1 cup of rice you need 1 tablespoon of salt, but you can taste it and add it if you want some more in. So 2 green chilies go in at this stage and 2 I'll be putting in towards the end. And the next thing to go in is my 400 to 500 grams of chicken boneless. So chicken has gone in, chicken boneless, and just cook it for good 10-15 minutes. So that's how it's looking after just over 15 minutes of cooking, and I'm sure the boneless must have gone tender by now. Now I'll add the vegetables. So my first vegetable goes in, which is potatoes. Now the carrots, peas and the sweet corns go in. अच्छा, जो भी मेरे साथ के लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि कोई भी पुलाव बनाने का तकरीबन एक ही तरीका है. इस पुलाव की एक ख़ास बात है कि मैंने अपने आप को एक चैलेंज देने की कोशिश की है कि बिल्कुल कम से ऑयल में ना ये कैसे बनेगा. ठीक है, और रेसिपी को भी बहुत सिंपल रखा है. तो देखते हैं कि आज क्या बनता है. I've now set the timer for 3 minutes. I don't want the vegetables to change their color. अच्छा, मैंने 3 मिनट का टाइमर इसलिए लगाया है कि मुझे ऐसे खड़ी वेजिटेबल्स पसंद हैं और उनका कलर भी बरकरार रहे. तो हम इसको 2-3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे. टाइम ना ज़ाया करिए, इतनी देर असी ना सलाद भी बना ली है ताकि साढ़ा कुछ टाइम बच जाए. Meanwhile, I've got my salad ready. So my alarm has gone off, as you can hear, and let's have a look. Okay, now what I'm going to do is I'll be using the same cup first of all that I used to measure the rice, and I've already soaked the rice for like last 2 hours, and the same cup I'll use to put water in, and it would be double the amount of the rice. So 4 cups rice and 8 cups of water, and that's my rice that I've soaked for at least 1 to 2 hours. My 8 cups of water have gone in, and what I'll do at this stage is I'll just quickly taste the salt, and if I want some more in, I'll just add at this stage. Look at the state of a pretty plow. I've just put the rice in, and you must have appreciated that I've just changed my spoon
because I use the wooden one when I'm just stirring everything and mixing the spices in. Once the rice are in, I use this one because it helps rice not to break basically. So here the flame would be high. Once it comes to a boil, I'll put the lid on and put it to medium, and just before it's fully done and before I put it on dum, I change the flame to low flame. तो एक ज़रा मैं जिसको कहते हैं ना उबाल आने का वेट कर रही हूँ, जब वो आ जाएगा तो मैं उसको मीडियम फ्लेम को कर दूँगी और फिर उसके बाद ढक्कन दे दूँगी। और दम तो आप सबको पता ही है कि उसके लिए तो फिर आप फ्लेम को लो कर देते हैं। अच्छा, इस बग़ैर ऑयल के जो ये पुलाव है ना, इसके पीछे राज ये है कि मैंने अभी रिसेंटली हेल्दी जिसको कहते हैं ना लाइफस्टाइल पे स्विच होने की कोशिश की है। तो अब मैं जो कुछ भी बनाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि उसमें ना कम से कम ऑयल का कंटेंट रखूं और देखूं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा नॉर्मली तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा तो नहीं, अच्छा खासा अमाउंट में ऑयल डालें तो ज़रा हांडी का टेस्ट या राइस का टेस्ट बनता है। तो आज देखते हैं कि फिर क्या होता है। So basically I've recently switched to healthy lifestyle and I'm trying to cook everything I used to cook with a bit more oil to see whether the outcome is the same, whether the rice tastes the same, whether the look still good. So we'll see. So today is the day one of that challenge. I've now put the lid on and I'll just change the flame to medium for about 5 minutes or so, and then we'll give it a dum. So let's open the lid and see. I can leave it on medium flame for a bit longer. अभी ये दम की स्टेज पे नहीं पहुँचे, इसलिए मैं इसको वापस ढक्कन दे देती हूँ. Let's check again. I think now I can leave it on dum, and I'll show how I'll do it. I think कि दम के लिए रेडी हो गए हैं मेरे राइस, तो अब चलें जी दम लगाते हैं. Large size tea towel and cover the lid with it and put it on this. Keep the flame as low as possible and put the timer on for 15 minutes. So my alarm has gone off, so let's have a look. Look at this. The best thing about good rice is, apart from the taste, is that each grain is separate. देखिए माशाल्लाह, देखो इसमें कितना कम ऑयल था, इसके बावजूद भी नॉट बैड, और जो है ना कितने माशाल्लाह खिले हुए बने हैं. एंड आई लव द कलर्स ऑफ द वेजिटेबल्स, दे मस्ट लुक देयर ओरिजिनल कलर बेसिकली, एंड दे लुक परफेक्ट टू गो विद माई लेफ्ट ओवर चिकपीस. ये देखिए जी, मेरा बचा हुआ सालन था और उसके साथ मैंने राइस बनाया और क्या बेहतरीन माशाल्लाह खाना हमारा रेडी हो गया है.